हेलो बच्चों। आज हम लोग एक कंसेप्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि प्रिपेयर द वीडियो फॉर क्लास 11th ऑल्सो। सो हम लोग जो आज एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, और इसी के साथ साथ एक और थ्योरी होती है दैट इज VACPR थ्योरी। तो सबसे पहले समझें कि हाइब्रिडाइजेशन का जो फिनोमिना है वो एक्चुअल में फिनोमिना है क्या। हम जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बॉन्डिंग को समझा करते थे, तो वी यूज्ड टू से दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस बाय the overlapping of atomic orbitals। केवल वही ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती थी जो कि क्या होती थी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसके हिसाब से देयर वर टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स दैट वी यूज्ड टू सी, दैट इज वन इज सिग्मा, अनदर इज पाई बॉन्ड। ठीक है, पर हर जगह पर VBT थ्योरी को अकेले कंसिडर करते हुए हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग इस बात को समझें कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन को हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। सपोज मेरे को मीथेन मॉलिक्यूल को एनालाइज करना है, तो मीथेन मॉलिक्यूल को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे, which is 1s2, 2s2 and it is 2p2. So when we write the configuration of the carbon atom, it becomes 1s2, 2s2 और इसके बाद क्या होता है 2p2। In this case, there are only two orbitals which are found to be the half-filled orbitals. इसके हिसाब से कार्बन को केवल दो ही बॉन्ड बनाने चाहिए, बट मीथेन जो है हमें दिख रहा है कि CH4 is actually involved in the formation of 4 bond। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, we are going to write the excited state of the carbon atom। अगर हम कार्बन की excited state को लिखते हैं, तो what we are going to say in this case, we will say that the configuration it will be indicating over here will be the one in which we will say that 1 is 2, 2 is 1, 2p3 orbital. This configuration which we have written for the carbon atom is there in the excited state of the atom. So being in the excited state of the atom, what we are observing in this case, that these 4 orbitals will intermix. They intermix because they are of nearly the same energies, and it will result in the formation of 4 sp3 hybrid orbitals। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रही हैं, इसलिए 4 नई ऑर्बिटल्स बनी। वो सब की सब कौन सी ऑर्बिटल्स कहलाएंगी, sp3 hybrid orbitals। So what is basically the hybridization phenomena? It is said to be the phenomena which involves intermixing of atomic orbitals of nearly the same energies, and it results in the formation of new set of orbitals. As we have mentioned, there will be the formation of 4 sp3 hybrid orbitals. All these 4 sp3 hybrid orbitals, they are found to be what? They all are found to be
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये सब कैसी ऑर्बिटल्स होंगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगी। और हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है in the same way as we represent the p orbital, except these loops are unequal in sizes. So if they are unequal in sizes, and this is the hybrid orbital we are having, so I can say that this is the s orbital of the hydrogen atom, and this results in the formation of sigma bond. So second important point about the hybridization phenomena is that we can say that hybrid orbitals always form sigma bonds. Is it clear? तो इस तरीके से चार जगह पर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जब कार्बन की 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मीथेन के केस में मॉलिक्यूल की जो शेप आती है वो क्या आती है? दिस कम्स आउट टू बी द tetrahedral shape, in which if I observe how many hydrogen carbon hydrogen bond are there, so we will say the bond angle is 109 degree, 28 minutes will be there in this case. Is it clear? तो ये शेप टेट्राहेड्रल हो गई और बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 109 डिग्री 28 minutes for the molecule of methane which we are observing over here. फाइन। इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो एटम की एक्साइटेड स्टेट में हुआ। अगर एटम की एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वहां पर जितनी ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। इसको और अच्छे से समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दैट इज BF3। और इस केस में आपको पता चल रहा है कि कौन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। इट इज द बोरोन एटम। और बोरोन एटम के कॉन्फ़िगरेशन में in the ground state, what do we observe? We observe that there is only one orbital which is found to be the half-filled orbital. The configuration is 1s2, 2s2 and it is 2p1. So this is the electronic configuration of boron we are observing. As per this, boron should be capable of forming only one bond. पर ऐसा तो नहीं हो रहा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल में हमें दिख रहा है कि जो सेंट्रल बोरोन एटम है वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर एटम की एक्साइटेड स्टेट दिखाने की जरूरत है। और वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम, बट इन दोनों एग्जाम्पल्स में अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट में होगा। दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। तो ऐसा होने की वजह से एक ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगी एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ऑल विल बी द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो दो बातें और निकल के आई और वो ये कि हाइब्रिडाइजेशन can occur in ground state as well as in the excited state of atom. Excited state of atom. Is it clear? And whatever be the number of orbitals that are formed over here, they are also
the same number of orbitals which we are observing them to be involved in the intermixing process. So we have indicated one of this orbital, this is another orbital, and this is another orbital. All these three orbitals are hybrid orbitals of the boron atoms. और हम कह सकते हैं कि ये सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगी. द रीजन बीइंग कि फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब की सब कैसी ऑर्बिटल्स हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि फ्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5. So in this case, these bonds are said to be the sigma bonds over here, and we can say that in this particular case there will be 3 sigma bonds, and the angle over here is equal to 120 degree. किसी भी मॉलिक्यूल में जो एंगल है वो इस बात से डिसाइड किया जाता है कि वहां पर जो जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो इस तरीके से अरेंज होने चाहिए कि उनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम हो. वो तभी पॉसिबल होता है जब एंगल जो होता है वो मैक्सिमम होता है. इसीलिए हम इस मॉलिक्यूल की जब शेप बताते हैं तो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, where we observe that all the bond which are present, all the atoms that are present at the vertices of the equilateral triangle over there. Similarly, अगर हम एक और मॉलिक्यूल के बारे में चेक करें तो वो मॉलिक्यूल है हमारा BeCl2. सिमिलरली जो बेरिलियम एटम है उसके पास कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, और आप इस एटम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? दैट इज 1s2 2s2. बट in the excited state the configuration actually becomes this is 1s, this is 2s, and this is 2p. So we say that this is the configuration that we achieve in this case. तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करेंगे so it will result in the formation of sp hybrid orbitals. तो क्या हो जाएगा? 2sp hybrid orbitals का formation होगा, और one of the hybrid orbital is represented in this way, another hybrid orbital represented in this way, followed by the overlapping with the p orbital of chlorine atom. This is the p orbital of chlorine atom. Similarly, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि this is the p orbital of chlorine atom, which is a half filled orbital, and what bond are formed over here? Sigma bond. So what do we observe in this case? What is the shape of the molecule we are having? The shape of the molecule is linear. And what is the bond angle we are having? It is 180 degree. So this is about the shape that we observe, that is in case of beryllium chloride over here. Is it clear to you? Similarly, अगर हमने देखा कि 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 हो या 4 हो, तो मॉलिक्यूल की शेप उसके अकॉर्डिंगली क्या आ रही है उसको हमने चेक करा. These are said to be the regular geometry we are having. PCl5 मॉलिक्यूल की इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जो कि गैसियस फेज में इसकी शेप और इसके कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करें तो नियॉन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या होता है? दैट इज 3s2 3p3. What is the configuration it is having? 3s2 3p3. तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि फॉस्फोरस क्योंकि
5 बॉन्ड बना रहा है, तो व्हाट वी शुड डू, दिस इज नियॉन के बाद द कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2, दिस इज 3p3, this is 3s, this is 3p. In the excited state, we have shown the हमने क्या शो करा है यहाँ पे, हमने शो करा है कि one of the electron is excited from 3p to 3d. So what will happen in this case, there are 5 orbitals that are involved which will intermix, and on mixing of 3s, 3px, 3py, 3pz and 3d z square orbital, it will form sp3d hybrid orbitals. Since 5 orbitals are involved in the intermixing process, so we are saying that 5 sp3d hybrid orbitals are formed. So in this case, we say that phosphorus के साथ ये 3 chlorine atoms होंगे, which is at the vertices of the equilateral triangle, where we can say कि एक ही plane में phosphorus है और तीनों chlorine atom present होंगे. One chlorine is above the plane, one chlorine is down the plane we are having over here, and we say that the shape of the molecule is observed to be TBP, that is trigonal bipyramidal. Okay. So we say that there are basically two types of bonds that are present in this. These bonds which are all these bonds जो कि एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? We call them as, what kind of angles that are there? They are equatorial bonds over there. और ये जो बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन है, इनको क्या बोला जाता है? एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है. And this is the shape that we are having for the molecule PCl5, that is trigonal bipyramidal shape that we are having in this case. After this we want to say this thing कि ये जो structure होता है PCl5 का, this is there in the gaseous phase only. अगर हम सॉलिड फेज की बात करते हैं तो इट एग्जिस्ट इन द डाइमेरिक फॉर्म एज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 माइनस, जिनकी शेप्स और ज्योमेट्री के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में. और ये फॉस्फोरस sp3 होगा और ये sp3d2 होगा. Is it okay? So this is the hybridization state of the phosphorus atom which we have obtained in PCl5 when it is present in the solid phase. Got it? In addition to this, हम एक और regular geometry के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है? Regular geometry जो हम पढ़ते हैं उसमें we discuss about the shape of SF6, another example, where sulfur atom is found to be sp3d2 hybridized, and the d orbitals which are involved are dx square, y square and dz square orbitals. All these are the regular shapes and the geometries which we are analyzing in this case. और sp3d2 शेप को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर these 4 fluorine atoms present on the same plane forming the vertices of the square over here, and one fluorine is above the plane, one fluorine is down the plane. अगर हम SF6 में बात करें तो we can say, if I want to find out how many 180 degree bond angles that are there in this case, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो सल्फर फॉस्फोरस ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा.
सिमिलरली ये फॉस्फोफ्लोरीन, फ्लोरीन और सल्फर भी 180 डिग्री होगा, और ये फ्लोरीन एंड दिस फ्लोरीन and with sulfur, so there are three 180-degree bond angles are there. Similarly, we also can analyze this thing that there are four 90-degree bond angles that we have indicated over here, और ये ऊपर वाला फ्लोरीन इन चारों फ्लोरीन के साथ क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री, और ये similarly with the fluorine which is present below the plane. So I can say that there are 12 90-degree bond angles that are there in SF6. Is it okay? Similarly, हम यहाँ पर PCl5 में भी कह सकते हैं कि that there are 3 120-degree bond angles are there and there are 6 90-degree bond angles that are there. Fine. इसी हिसाब से ही अगर हम बात करें फॉर द मॉलिक्यूल IF7, तो IF7 में क्या होता है, IF7 के स्ट्रक्चर में we say that iodine is forming bond with a 7 fluorine atom and the shape that is observed is pentagonal bipyramidal, और एंगल जो होंगे वो 72 डिग्री और 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि आयोडीन जो है वो यहाँ पर कितने एंगल के साथ, we observe that there are 5 72-degree bond angles that are there. Fine. One fluorine is above the plane and one fluorine is down the plane, that we observe as the angle. Therefore, the shape becomes pentagonal bipyramidal shape of IF7. ठीक है, इन सारे डिस्कशन से ये बात भी निकलती है कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होती हैं. हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती हैं, दे ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड्स ओवर हियर. इन एडिशन टू दिस, अगर हम यहाँ पर एक इसका ओवरऑल सम अप लिख दें तो मॉलिक्यूल के बारे में हम लिख सकते हैं. ठीक है, after this we can write about the hybridization of the atom. Fine. We can also mention the number of bond pair of electrons also, and we can also represent the shape of the molecule in this case. So what we can say that in this particular arrangement, हम सबसे पहले एग्जाम्पल लिख रहे हैं किसका, that is for CH4. We know its hybridization is sp3 and we know that there are 4 bond pair of electron and the shape is tetrahedral. Fine. So here we are having the example. ठीक है, here we are having the hybridization, number of bond pairs, and we are having the shape and the bond angle in this case. Similarly, हम ये कह सकते हैं in case of boron trifluoride, hybridization is sp2, bond pair of electron is 3 और shape क्या आती है, trigonal planar with a bond angle of 120 degree over here. Similarly, for BeCl2, hybridization is sp2 bond pair and the shape is linear in this case, followed by PCl5 where the hybridization is sp3d 5 bond pair and shape was trigonal bipyramidal where angle will be 120 degree and 90 degree. And lastly, the example of SF6 where the hybridization was sp3d2 and the shape was octahedral. और हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था
IF7 का, which is sp3d3, 7 bond pair of electrons will be there, and the shape was pentagonal bipyramidal. Fine. So this is the analysis we have done of all the molecules which we have discussed so far. Next video में I'll be discussing the about the different ions that will be there. ठीक है ना, ions की hybridization state कैसे निकालनी है, और VSEPR theory if there is a presence of lone pair of electron, what we should do in that case. So uh, attend the lecture regularly, so you will be getting all the important points over here of bonding chapter over here. So thank you.